back to my channel. My name is Juhi. So you read by the title, I'm doing Nykaa haul, for which I'm really excited about. So I brought this product a month ago. So we have some makeup products and few skincare products too. I'm excited because इसमें से कुछ ऐसे products हैं जो मैंने कभी पहले try नहीं किए थे, but last 1 month में मैंने try किए, तो साथ में मैं छोटे-छोटे review भी देते जाऊँगी और इसमें से कुछ ऐसे products भी हैं जो बहुत ही affordable है. So if you guys are looking for some affordable makeup, then keep on watching. पहले मैं मेकअप प्रोडक्ट से स्टार्ट करूंगी, फिर हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे आएंगे. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज प्रेप मी अप फेस प्राइमर फ्रॉम नायका. I really like this product because it's non-greasy, it has a lightweight formula, plus it has a satin matte finish, which I really like about this product, and it retails for 499 rupees and it's affordable too. The second product we have is Maybelline Fit Me Foundation. I'm in a shade 120 Classic Ivory, and if you are beginners then you should definitely try this product because it's affordable and it retails for 549 rupees, but ये मुझे डिस्काउंट में अराउंड 500 पड़ गया था. So you can definitely try this product. A fun fact about this product is मैंने कभी ऑनलाइन फाउंडेशन या कंसीलर नहीं परचेस किया बिकॉज मुझे शेड नहीं पता रहता है, बट दिस टाइम आई टुक अ रिस्क एंड I did a pretty good job. So finally I got the correct shade and I'm happy about it. Coming to the next product we have is, but before that, have you subscribed to my channel yet? If not, then abhi jaake subscribe karo. The next product we have is again from the Maybelline and it's a concealer and I'm in the shade 10 Light. It's a very affordable product and it cost 475. I mean MRP इसकी 475 की थी, बट ये भी मुझे डिस्काउंट में अराउंड 305 रुपीज़ का पड़ा. सो डोंट वरी, आई विल एड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट आउट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट प्रोडक्ट. इट्स मिनी लिपस्टिक फ्रॉम नायका कॉस्मेटिक. दिस इज सो टाइनी एंड क्यूट and I have in a shade 01 Bombay and they also have many other shades, so I'm definitely going to try more shade and going to review them all to you. Coming to the next product is that product जो मैंने कभी use नहीं किया है, I mean to say from that particular brand. So I pick one product from that brand and that is K Beauty Contour Stick. So this is a product I'm using for the first time and I'm in the shade Beach Focus. So I really like this product because it blends out quickly and it's easy to apply. Coming to the next product we have is Brow Girl Eyebrow Definer Pencil and this is how the products look like. It comes within 2 caps. The first cap, the main product is there. I hope you can able to see. And in the second cap, you can define the desired shape and this is how the products look like. I will add every product's link in the description box, so do check it out. The next product is my another favorite and I can't tell you how much I like this product, and that product is ta-da! It's a beautiful eyeshadow palette from Revolution and look at the beauty. I mean, it has all the shades and this is so beautiful palette. Like you can create so much. Right now मैंने आई शेडो भी इसी पैलेट से क्रिएट किया है और इसका पिगमेंटेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा and it cost me 950 rupees. I think it's worth the cost and I really like this and I really recommend you guys to purchase this because you got so many colors and you can create so many looks from this single palette. The next product we have is from Pack Cosmetic and it's a foundation brush and I really like this and it has a number 265, but I don't use it for my foundation. I use it for my concealer and for the blush and it's really soft and gentle. I really like this product. Oh my god, this is the first purchase also from this particular brand. I don't have anything from this brand, so this is the first product. And also it comes with the translucent cover because I think this is a very good idea to give the product brushes
in this plastic sort of a thing, because you can easily protect it from dust and ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा. So I really like this. वो कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो आप ऐसे ही बाय कर लेते हो बट उसको कभी यूज़ ही नहीं करते हो, या फिर यूज़ करना भूल जाते हो, या फिर यूज़ करना आता नहीं है. सो हाँ, नेक्स्ट प्रोडक्ट वही है. सो आई परचेज दिस फेक लैशेज फ्रॉम नायका एंड आई डिडंट यूज़ इट येट. आई डोंट नो व्हाई, बट आज की वीडियो में सोचा था कि मैं इसको अप्लाई करूँगी, बट आई मीन मैं भूल गई इसको अप्लाई करना. सो ये आता है MRP इसकी 199 रुपीज़ की, विच इज़ सो अफोर्डेबल. एंड आई गॉट इट बिकॉज आई थॉट कि आई लैशेस लूँगी तो मैं एक अच्छे ब्रांड की लूँगी. तो आई पिक्ड नायका एंड यू गाइज नो हाउ मच नायका आई लाइक इट, क्योंकि मैंने इतने हॉल्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ. सो या whenever I'm going to try this product, I'm definitely going to review it, and I think मैं इसको review Instagram पे करूँगी. तो do follow me on my Instagram account also. Sorry, I have to shift my location because my camera's battery is dead and there are more videos lined up. So I switched towards my iPhone, and right now I'm shooting with my iPhone. So yeah, coming to the second last product of this haul is Nivea deodorant roll on. एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था मुझे, तो 1.5 जब से प्रोडक्ट आया है, 1.5 मंथ से पहले से, तब से मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया है. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट, और मैं डेली यूज़ कर रही हूँ. एज यू कैन सी मैंने ये हाफ बॉटल ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग इट प्रीटी एवरी डे. कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज T3 Essential Oil from Nykaa. And I cannot tell you how much it has reduced my acne and the red spots. If you guys have red spots or the acne, must take it. And this is the packaging. Basically इसका packaging मैंने save करके रखा था क्योंकि let me show you. इसके साथ ये ड्रॉपर भी आता है जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने ये T3 ऑयल निकाल सकते हैं. This is how it looks like. Yeah. So और ये मैं इसको इसी बॉक्स में सेव करती हूँ ताकि कोई भी डर्ट या कुछ भी इस चीज़ पे अफेक्ट ना हो, या इसको मैं इसमें पैकेट में रखती हूँ हमेशा संभाल के ताकि कोई भी उस ड्रॉपलेट पे डर्ट या कुछ भी ना लगे. एंड दिस इज द प्रोडक्ट. So that's all for today's video. Hope you guys enjoyed this haul and found this very useful. So give this video a big fat thumbs up if you like it, and share this video, and also comment down below if you want such more hauls, and I will see you in the next video. Bye bye.